Dear student, I am going to start question number 4 of exercise 1.1. 3 questions have been solved in previous classes. So I am going to start question number 4 of exercise 1.1, class 10. Question number 4 is use that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer. Use that. 4 number question. Use that the square of any positive integer is either of the form for 3m or 3m plus 1 for some integer m. दिखाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है. वी हैव टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है. To show this, let a be any positive integer. Let a be any positive integer, and a be any positive integer and b is equal to 3, because in the problem divisor is given 3. Then by Euclid's division lemma, by using Euclid's division lemma, a is equal to 3q plus r. Here the possible values of r is 0, 1, 2. Then by using Euclid's division lemma, a बराबर 3q plus r. Now putting the values of r in 1. Case 1, if when r is equal to 0, then a बराबर 3q plus 0 बराबर 3q, या a स्क्वायर बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर. वी कैन राइट for 9x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर बराबर 3m,
where m is equal to 3q square, where m is equal to 3q square. Case 2, when r is equal to, case 2, when r is equal to 1, then a बराबर r is equal to 1, then a बराबर 3q plus 1, r is equal to 1, then a बराबर 3q plus 1, again squaring a स्क्वायर बराबर 3q plus 1 का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q plus 1. To simplify in the form of a plus b whole square, you know that a square plus 2ab plus b square, a square और 3q plus 1 का स्क्वायर बराबर is equal to 3 into, we can write 3 into 3q square plus 2q, 3q square plus 2q plus 1. 3q square plus 2q plus 1 बराबर 3 into m बराबर 3 into m plus 1, where m is equal to 3q square plus 2q. Case 3, when r is equal to 2, case 3 when r is equal to 2, then by Euclid's division lemma a is equal to a बराबर 3q plus 2. Again squaring both sides, a स्क्वायर बराबर 3q plus 2 का होल स्क्वायर, simplifying in a plus b whole square बराबर 9q square plus 12q plus 4. We can write for this 3 into 3q square plus 4q plus 1 plus 1. बराबर 3m plus 1, where m is equal to 3q square plus 4q plus 1. Hence the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. It was to be proved. Hence the square of any positive integer, hence the square of any positive integer is of the form 3m plus 1 and 3m plus 1 is either of the form 3m or 3m plus 1. In this problem, we have to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वी हैव टू शो दैट किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कुछ पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m अथवा 3m+1 के रूप का होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we suppose that a is equal to a be any positive integer. To solve that, let suppose that a is equal to any positive integer and b बराबर 3, because here division is given 3. So we suppose that the value of b is equal to 3 and the possible values of r is equal to 0, 1, 2, less than 3. So by using Euclid's division lemma, a is equal to 3q plus r, dividend बराबर division into quotient plus r. Case 1, when r is equal to 1, now putting this value in 1, r is equal to 1, a बराबर 3q plus r is equal to 0 बराबर 3q. Now squaring both sides, a square बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर 3q, 9q square. We can write for 9q square is equal to 3 into 3q square बराबर 3 into m, where m बराबर 3q square, where m is equal to 3q square. Case 2, when r is equal to 1, putting the value of r in 1, a बराबर 3q plus 1, 3q plus a बराबर 3q plus r अथवा a स्क्वायर बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर बराबर 3q plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q plus 1 बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q plus 1. समझिए, कॉमन टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम 9q स्क्वायर प्लस 6q बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q plus 1, where m is equal to 3q, where m is equal to 3q square, where m is equal to 3q square plus 2q. Again, case 3, when r is equal to 2, putting this value in 1, a बराबर 3q plus 2, squaring both sides, a square बराबर 3q plus 2 का होल स्क्वायर बराबर 9q square. To solve this, in the by the formula a plus b whole square बराबर, you know that a square plus 2ab plus b square, and taking common 3, we get 3 into 3q square plus 4q plus 1 बराबर 3m plus 1, where m is equal to 3q square plus 4q plus 1, where m is equal to 3q. Hence the square of any positive integer, is of the form 3m या 3m+1. अर्थात सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का के रूप का होता है. This problem you must write this problem in your notebook, because this problem is new for you in this term. So now only one problem is left in this problem, in this exercise 1.1. Only one problem is left. So I am going to also solve this problem. Question number 5. I am going to solve this. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m+1. Use any positive integer is of the form 9m या 9m+1 या 9m+8. दिखाएं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ये दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m+1 अथवा 9m+2 के रूप का होता है. वी हैव टू शो दैट
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m अथवा 9m+1 अथवा 9m+8 के रूप का होता है. वी हैव टू शो दैट. सो आई एम गोइंग टू solve last problem of this exercise. Question number 5. Write question number 5. Question number 5. Use Euclid's division lemma. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m+1 या 9m+2. This question will be solved by the previous problem which have been solved by me. Question number 4. Same question. So you can solve this problem similarly. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m+1 or 9m+8. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m+1 अथवा 9m+8 के रूप का होता है. किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 अथवा 9m+8 के रूप का होता है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, at first we suppose that n be any positive integer. To show that let n be a positive integer. Let n be a positive integer. Then b is equal to 3. You can suppose b is equal to 9. You can take b is equal to 9, but if we take b is equal to 9 in place of 3, then their solution will be big. So we suppose that b बराबर 3, because cube of 3 will be in the form of 9. So then b बराबर 3. Let us suppose that b बराबर 3, divisor बराबर 3, because the cube of b will be in the form of 9. So you can take b बराबर 9. If b बराबर 9, then the possible values of remainder will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Less than 9. We can take. Then the solution will be big. So let us suppose that b बराबर 3. Let n be a positive integer
and then b बराबर 3, then by Euclid's division lemma, then by Euclid's division lemma, n बराबर 3q plus r, where r is equal to 0, 1, 2. If we take b बराबर 9, then the possible values of r will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So to solve this problem in short way, I took b बराबर 3 by Euclid's division lemma. N is equal to 3q plus r, where r is equal to 0, 1, 2, 3. Now case 1. When r is equal to 0, putting this value in 1, r is equal to 0, then n बराबर 3q plus 0 बराबर 3q. Now cubing in both sides, nq बराबर 3q, nq बराबर 3q का होल क्यूब is equal to 27q cube. We can write for 27q बराबर 9 into 3q cube बराबर 9m, where m is equal to 3q cube. We can suppose m is equal to 3q cube बराबर 9. Case first, when r is equal to 0, then by Euclid's division lemma, n is equal to 3q plus 0 बराबर 3q. Cubing both sides, nq बराबर 3q का क्यूब बराबर 27q क्यूब बराबर 9 into 3q का क्यूब बराबर 9m, where m is equal to 3q. Case 2, if we take r is equal to 1, case 2, when r is equal to, putting this value in 1, n बराबर 3q plus 1. Again cubing, nq बराबर 3q plus 1 का क्यूब. Now apply the formula of a plus b whole cube. You know that a plus b whole cube बराबर a plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So using the formula of a plus b का whole cube बराबर a plus b का whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube बराबर 27q cube बराबर 27q cube plus 27q square plus 9q plus 1. Applying the formula of a plus b whole cube, you can write 3q plus 1 का whole cube in this form. 27q cube plus 27q square plus 9q plus 1 बराबर taking 9q common, 9q बराबर 9q, taking 9q common in the bracket, we can write 3q square plus 3q plus 1. We can write this in the form of 9m plus 1, where m is equal to 3q square plus 3q plus 1. 9m plus 1, where m is equal to
where m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, 3q m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1. Case 3. Now putting r is equal to 2 in 1. Case 2. Case 3, when r is equal to 2, then using Euclid's division lemma, n is equal to n बराबर 3q plus 2, then Euclid's division r is equal to 2, then n बराबर 3q, r is equal to 1, n बराबर 3q plus n is equal to 3q plus 2. Cubing both sides, nq बराबर 3q plus 2 का whole cube. Using the formula of a plus b whole cube बराबर a cube बराबर 27 cube plus 54 q square plus 36q plus 8 taking common 9q बराबर अथवा nq बराबर taking common 9q in the bracket we write 3q square plus 6q plus 4 plus 8. For this we can write 9m बराबर 9m plus 8 where m is equal to q into 3q square plus 6q plus 4. 3q plus 4. 3q 9 into 3q square plus 6q plus 4. We can write for this m. So it is proved that the cube of here nq बराबर in first case nq बराबर in first case nq बराबर 9m, in second case nq बराबर 9m plus 1, and in third case nq बराबर 9m plus 1. So it is proved that the cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1 and 9m plus 8. So this exercise is solved, completed. The exercise is completed. Now I advise you to practice this all problems of exercise 1.1 and with example. You must practice from 1 to 5 number and all the examples of exercise 1.1. In the next class, I will start exercise 1.2. You must learn and try to solve exercise one example of 1.2. Next class, solve you. Thank you. लिख लेंगे।